नमस्ते। चलिए आज देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अब हम कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? ठीक, कंपोनेंट फॉर्म में मतलब 3 डायमेंशन फॉर्म में हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को यूनिट कैप जे से, और जेड एक्सिस को यूनिट कैप के से। P is any point in the space. Suppose that here is a point P. This point P. This is point 0. This point is P. This point is P. So now, and this is the, we can express this is vector or तो हम वेक्टर OP को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर OP को 3 डायमेंशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वेक्टर OP को 3 डायमेंशन फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको डायरेक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर OP को इस डायरेक्शन में एक्स आई, ये हमारा वाई जे हो गया और ये जेड के हो गया। तो एक्स आई वाई जे जेड के, इस फॉर्म में हम OP को लिख सकते हैं। एक्स आई वाई जे और जेड के। OP हमारा वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई वाई जे जेड के। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक, कंपोनेंट फॉर्म में एक्स वाई जेड आर द स्केलर कंपोनेंट। यहाँ हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर का क्या है? कंपोनेंट फॉर्म। एक्स वाई जेड आर स्केलर कंपोनेंट। Scalar component and xi, yj and zk are vector these are the vector component। ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया। हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आर लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सेम उसी तरह से है जैसे आप 2 डायमेंशन में, अगर ये राइट ट्रायंगल है, ये एक्स है हमारा, ये वाई है, ये आर है, हम आर को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें एक डायमेंशन और बढ़ गया जेड, और ये सभी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दे आर फॉर्म इन दिस फॉर्म म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये सभी आपस में म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका हम मॉड ऑफ आर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर। अब हम देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो गया डायरेक्शन कोसाइन। Direction cosines of a vector. So now let us see the direction cosine of a vector. If this OP, this vector OP makes the angle alpha from x-axis, beta from y-axis, and gamma from z-axis. If this OP makes the angle alpha, beta, gamma from x-axis, y-axis, and z-axis, then here you see that this will be the alpha. Then from this figure you see cos alpha is what? X by r. The x by r, the x in the direction of x, there is what? In the direction of x is what? R cos alpha. This r cos alpha, x represent in the direction of x-axis, so that it is called the direction cosine. In the same way, you can write cos beta y by r, and cos gamma z by r. This is the y equal to r cos beta and z equal to r cos gamma, in this way. And we can represent with cos alpha को हम L से लिखते हैं। This is LR, y equal to MR, and z equal to NR, z equal to MR. The LR, MR, NR is the number, and this number is known as the direction ratio. So these number, the number x, y, z, the number x, y, z are LR, MR, NR are called direction ratio. Direction ratio. What is the direction ratio? Direction ratio is a number proportional to the direction cosine. So that it is called the direction ratio. And that is the LMN. LMN are where L, M, N are direction cosine. Where L, M, N are direction cosines. These are the direction cosines. Now, if you write a vector R in this form, if you will write a vector R in this form, AI plus BJ plus CK, then ABC are direction ratio. Then A, B, C are
direction ratio. These are the direction ratio. So here you see these are the direction ratio. So now here you note one note here. In this note here L square plus M square plus N square, that will be equal to 1. And direction cosine of are given by the direction cosine of this vector P is given by direction cosines of R given by डायरेक्शन कोसाइन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से एल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ जैसे एल एक्स वाई आर, तो एक्स वाई आर दैट इज ए. अगर ए है हमारा ए आई बी जे ए, तो ए बाई आर मीन्स ए बाई मॉड आर, तो ए बाई मॉड आर अब क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ए बाई अंडर रूट a square plus b square plus c square. These are the direction cosine. m क्या हो जाएगा b अपॉन डायरेक्शन रेशियो को हम डायरेक्शन कोसाइन में इस तरह से चेंज कर सकते प्लस c स्क्वायर, और n हो जाएगा हमारा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस तो इस तरह हमारा हो गया डायरेक्शन कोसाइन. ठीक, ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन. इसकी बात है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. अगर 2 पॉइंट्स को वेक्टर ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए हमारा स्पेस है एक्स वाई जेड आई जे के, कोई भी 2 पॉइंट है हमारा. मान लीजिए हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है P1, हमारा पॉइंट है P1 P2, और ए पॉइंट दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है x1 y1 z1, इसका दिया हुआ है x2 y2 z2. ए पॉइंट हो गया, ठीक. The position vector of P1 and P2 is given. The position vector of P1 and P2 is given. Then we can find the P1 and P2. So how to find the P1 and P2? We can write P1 P2. The position vector of P1, position vector of P2
minus position vector of P1. Position vector of P2. Position vector of P2 is given क्या x2 y2 z2. इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x2y प्लस y2z प्लस z2k. तो ये हमारा हो जाएगा x2y प्लस y2j प्लस z2k और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 लिखेंगे. ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k. ये हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i. ठीक, इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 की. ठीक, अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ P1 P2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर अंडर. ये हमारा हो गया वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन दिस वे. ठीक, अब नेक्स्ट इज द लेट अस सी सेक्शन फार्मूला. This is the vector joining the 2 points. Next, section formula. Let us see section formula. Section formula and first है internally division. First internal division. Internal division, that is the, मान लीजिए हमारा ये वेक्टर ओपी हो गया, वेक्टर ओपी, और यह हमारा वेक्टर ओपी हो गया एंड वेक्टर ओक्यू, ओक्यू here is the PQ. R is the point. R is the point. Divide the internally. This is vector A. This is vector B, and this will be divided in the ratio M ratio N. R divide vector PQ in M ratio N. It is the same as which you have learned in the 11th class in coordinate geometry. That is the in coordinate geometry you have learned the section formula. Section formula of a line, section of a line, that is in the same way. There you can write M by N. In the place of M, this PR, the vector PR, this is suppose that vector R. So we can write vector R minus vector A, and in place of N, write vector B minus vector R. Multiply this R, M
vector B minus vector R, that is N, vector R minus vector A. So here you see MR plus NR, that will be MB plus NA. The vector R, we can write M vector B and vector A upon M plus N. So this is the formula for internal division. So you can get the internal division. If line divide externally, so how you get the formula? If line divide the externally, just as for the external division, in this let this point is O, here is the O, let this will be P, this is vector A, this is the point P, and here is the point R, this is point R, divide the line externally, and this will be R, this will be R, and this is a P, and this point is Q, and this line is M, this is M, this is N, this is O, P, Q and R. So for external division, if line divide externally, second, for external division, for external division, only this formula is changed. Here is the negative sign, MB minus NA, in the same way as you have learned in the coordinate geometry, from M minus N. So this is best formula which for the external division. Okay. Now let us see question number 1, exercise 10.2. Question number 1, exercise 10.2. In the first question, it is given, find the magnitude of vector A equal to 2i minus 7j, 2i minus 7j minus 3k. Now let us see, find the magnitude of this vector. So to find the magnitude, find the mod of vector A. You know the mod of vector A is A square plus B square plus C square. The 2 square, that is 4, 49 and 9. So that is what? That is a 63. This will be 63. This will be what? $62. Now 49 and 4, 53 and 62. This will be root 62. So this is the
magnitude of the vector A. In this way you can find the magnitude of vector A. And in the question number 5, exercise 10.2, in this question it is given, question number 5, find the scalar and vector component of the vector with initial point 2, 1 and terminal point -5, 7. Initial point 2, 1, initial point is given 2, 1 and terminal point is given -5 and 7. The initial point and terminal point is given, and the scalar component and vector component. The first we find the vector AB. To find the vector AB, the position vector of B is given and position vector of A is given. The position vector of B minus position vector of A, x2 minus x1, a line joining 2 points, -5 -2, that is the -7i, or 7 -1 plus 6j. So what is the scalar component? Scalar component क्या होगा? -7 and 6. Vector component -7i और 6j यूनिट. ये हो गया स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट. ठीक. नेक्स्ट, the question number 8, same exercise. Question number 8. In this question it is given, find the unit vector. Find the unit vector joining the points, 2 points P and Q. So P and Q in this points is given here. Points P is given and Q is given. This, the point P is given, position vector of P is given 1, 2, 3, and position vector of Q is given 4, 5, 6. 4, 5, 6. Position vector is given. This vector is supposed R. Then find the unit vector in the direction of PQ. Find the unit vector in the direction of PQ. The first find the PQ. Let this will be vector R. That is PQ. That is position vector of Q minus position vector of P, x2 minus x1, 3i plus 3j, 6 minus 3, 3j. This one. To find the unit vector, R cat, that is vector R mod of R. The R is what? 3i, 3j and 3k, and mod of this under root 9, 9, 9. So that is 26. This will be
3i plus 3j plus 3k upon 3 root 3. So we can get this that will be equal to unit vector r, take the 3 outside common, we get 1 upon root 3i plus 1 upon root 3j plus 1 upon root 3k. This is the question number 8 in this. Now let us see question number 10. Exercise 10.2, question number 10. In this it will be given, find a vector in the direction of 5 pi minus g plus 2k, magnitude is at unit. 5 pi minus g, vector A is given 5 pi minus j plus 2k. 5 pi minus j plus 2k and magnitude of the vector, magnitude is given 8. So find a vector in the direction of vector A and whose magnitude is the vector 8. So now let us see how you find the A vector whose direction is in this and magnitude of vector A. The first you find the unit vector A, that is what? Vector A on mod of vector A, write the vector A 5 pi minus j plus 2k, mod of A under root 25 plus 1 plus 4. So that is the 30. 5 pi minus j plus 2k upon root 30. In this, you can get this root 30. And we find a vector A. We find a vector A. We find a vector B that will be equal to 8 unit vector A in the direction of vector A. So that find the vector in the direction of A, the unit vector A which magnitude is 8. The first you find the unit vector A and then multiply with the magnitude, then you will get the vector whose magnitude is 8 and in the direction of the vector A, जो A के डायरेक्शन में हो और जिसका की मैग्नीट्यूड 8 हो. 8 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 40 1 root 3 30i minus 8 1 root 30j plus 16 1 root 30. ये हमारा हो गया वेक्टर बी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है. क्वेश्चन नंबर 11 है. In this question it will be given, show that the vectors this and this are collinear. 2i minus 3j plus 4k, 2i minus 3j plus 4k. This and vector b
and vector B is given minus 4i plus 6j minus 4i plus 6j plus 6j minus 8k minus 8k, so that vector A and B are collinear. The two vectors, you know that two vectors A and B are collinear if vector B is equal to lambda times of vector A, or vector A is lambda times of vector B. The two vectors A and B are collinear if vector B is equal to lambda times of the vector A. So now here you see from vector B you take the minus 2i as common, so then you get 2i plus 2i minus 3j plus 4k. So now you see this will be what? That is the vector A. B equal to minus 2 vector A. If lambda equal to minus 2, then vector B equal to lambda vector A. So that vector A and B are collinear. So this will be the question number 11. And now let us see next question number 7, question number 12. Question number 12. Find the direction cosine of the vector exercise 10.2. Find the direction cosine of the vector I plus 2j plus 3k. Find the direction cosine of the vector I plus 2j plus 3k. Find the direction cosine of this vector. Let this will be the vector x. Find the direction cosine of the vector. Find the direction cosine. Here you see that this will be r. Find the direction cosine of the vector r. To find the direction cosine, here you see vector A equal to what? A equal to 1, B equal to 2, and C equal to 3. The ABC is what? These are the direction ratio. ABC are डायरेक्शन रेशियो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं. डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइन. द फर्स्ट यू फाइंड द mod of r. The mod of r is what? Under root 1 plus 4 plus 9, that will be root 14. So find the direction cosine. So that is L equal to A 1 upon under root 14, and M is what? B. The B is what? 2 upon root 14, and N equal to what? C 3. C upon under root A square plus B square C square, that is this, the root 14. So this is the direction cosine of the
line. Direction cosine of the vector I plus 2j plus 3k. So now next question number 17. CPC with position vector A, B and C respectively form the vertices of a right angle triangle. The vertices of a right angle triangle, position vector of given. The position vector of given, position vector is given B, C, A. That this is the A. Position vector of A is given -4 and -4. Position vector of A is given and position vector of B is given. Here is given 2 -1 -1 and position vector of C is given. The position vector of C is given 1 -3 -5. 1 -3 -5. In this way, it will be given vector A, vector position vector of A, B and C are given. In this way is given the position vector of A, B, C is given. Vector A is given 3i -4j -4k. Position vector of B is given 2i -j and -k. Position vector of C is given vector C I -3j -5k. This will be given so that it is a right triangle. The first we find the vector AB. The vector AB is what? Position vector of B minus position vector of A. The position vector of B minus C, so that is the minus I. We get minus I. Here you get 4j. You get 3. Here you get, this will be 2 plus 3j and this will be plus, so here you get 3 minus I plus 3j plus 3k. You get this in this way. Here minus I position vector of B plus k. Position vector of B here is given plus 1. Position vector of B is given plus. So this will be what? That is 5k. AB. This is the vector AB. In the same way, find the vector BC. Find the vector BC. The BC is what? Position vector of C. Position vector of C minus position vector of B. The position vector of C minus B. This minus this minus I and this minus this, the minus 2j and this minus this, the minus 6k. Minus I minus 2j minus 6k in this way. And then you find AC. Here you find AC. The position vector of C minus position vector of A. The position vector of C is what? I minus I. Here you get minus I and this will be
minus 2i, and this will be minus 6k. So this is the AC. So you get this AC. Minus 2i plus j plus q minus 2i. The position vector of C minus A. The C minus A minus 2i. C minus A minus 2i. And here is the minus 3. So here we get plus I. Plus I. Here minus 5 plus the minus 2. The minus 2i minus 2i minus 2i plus j and plus k. Okay? And in this way, find the mod of AB. Here you find mod of AB. The mod of AB is what? Mod of AB 1, 9 and 25. So that is the root 35. Mod of BC. You get mod of BC. Mod of BC. That is 1 plus 4 plus 36. That is a root 41. And here mod of AC. Mod of AC is what? Mod of AC 4 plus 1 plus 1, that is root 6. Apply the Pythagoras theorem. Then you see here BC, mod of BC square plus mod of EB square plus mod of EC square. So that is mod of EB is what? That is 35 plus 6. This is 41. So this will be equal to 41. So that triangle ABC, Pythagoras theorem, the converse of Pythagoras theorem, this is true. So show that it is a right triangle. Show that it is right triangle. इस एक्सरसाइज में कुछ वेक्टर के बेसिक्स देखिएगा. उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, और हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. तो ये सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं. और पोजीशन वेक्टर, ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं. इन सबको जान करके हम एक्सरसाइज 10.4 हम एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से. 17 का एक्सरसाइज 10.2 हम कर सकते हैं. इसमें और जो क्वेश्चन है, हम हर तरह के क्वेश्चन टैकल कर लिए हैं. और जो क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है. नेक्स्ट टाइम वी सी द स्केलर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए. ओके, थैंक यू.